Big update, 60% DA and DR from January 2026 and 8th CPC base fitment factor also confirmed. Hello everyone, Namaskar. This is Dr. Abdus Samad and you are watching Dr. Samad Global. Here is big update for government employees and pensioners. DA and DR from January 2026 is now almost confirmed to touch 60%. And the latest consumer price index for industrial workers data for December 2025 has been released. A major hint about the base fitment factor for the 8th CPC has also become clear. What does this mean for your salary, pension and future pay revision? Let's understand everything clearly. Welcome to Dr. Samad Global, your trusted platform for digital education, financial awareness and important national and global updates. If you are a government employee, pensioner or aspirant, this update is extremely important for you. So, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. लेट अस स्टार्ट नाउ. Big updates on 60% DA and DR from January 2026 and 8 CPC base fitment factor. Consumer Price Index for Industrial Worker Data Update. The Labor Bureau, Ministry of Labor and Employment, Government of India has officially released All India Consumer Price Index for Industrial Workers for December 2025. This index is crucial because it is the basis for calculation of DA and DR for government employees. As a result, Dearness Allowance and Dearness Relief from January 2026 is expected to reach around 60%. This is a major milestone because the DA under the 7th Pay Commission started at 0 in January 2016 and has steadily increased due to inflation adjustments. So ये जो DA 7 पे कमीशन में जब पे कमीशन स्टार्ट होता है उस टाइम 0 जनवरी टू जून तक 0 होता है, ये रीसेट हो जाता है, बेसिक का साथ मार्ज होता है. देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जुलाई से स्टार्ट होता है और अप टू दिस इज द प्रेस रिलीज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये प्रेस रिलीज 30 जनवरी 2026 को रिलीज किया था. इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2025 रिलीज किया है. अकॉर्डिंग टू दिस रिलीज प्रेस रिलीज, सो अप टू दिसंबर 2025 दिस ऑल इंडिया Consumer Price Index for industrial workers was remained at 148.2 points. So this is most important index for fixation of the DA. So inflation based on Consumer Price Index for industrial workers general, this is year on year basis इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं हम लोग. तो और इन्फ्लेशन का ऊपर ही प्राइस राइज डिपेंड करता है. तो ये जनवरी 2025 में इन्फ्लेशन था 2.259%, while इन्फ्लेशन अभी दिसंबर में ये इन्फ्लेशन अभी हुआ है 3.13%. 3.13% inflation in the month of December 2025. Expected DA and DR from January 2026. The Consumer Price Index for industrial workers for the month of December 2025 remained at 148.2 points. So ये है index का value. According to the press release issued by the Labor Bureau, Ministry of Labor and Employment, Government of India. So this CPI-IW indicates that a 2% increase in DA/DR effective from January 2026 will bring it to about 60.34% under the 7th CPC. So अभी तक हम लोग 7th CPC का अंडर में ही पे एंड सैलरी मिल रहा है. So ये फिगर अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स ये फिगर आता है 60.34%. The DA and DR rate
is calculated by taking the absolute value, leaving out the decimal value. So ये जो 60.34% होता है, इसको जो absolute value है 60%. So remaining decimal value 0.34% वो नहीं मिलेगा, वो carry forward होगा next installment का साथ में, that is जुलाई 2026 का DA होगा, उसी का साथ वो adjust होगा. So all speculations regarding future DA and DR have been resolved. So with this press release, अभी जो DA DR का जो expectation है वो fulfill हो गया with this announcement. So consequently, the 60% DA and DR from the month of January 2026 is now confirmed. तो ये तो minimum 60% DA हो जाएगा, अभी 58% था तो 2% DA इंक्रीज होगा, तो ये टोटल DA फ्रॉम जनवरी टू जून 60% होगा. And this will be approved by the Union Cabinet expected in the month of March 2026. So most important is that the government of India considers only the whole number for DA DR. तो जो भी fraction आता है वो next future के लिए carry forward होता है for disbursement. Therefore, any figure between 60% and 60.99% will be officially announced as 60%. So ये whole absolute value को DA announce करता है. What 60% DA DR signify? तो इसका क्या matter करता है? So if DA reaches 60%, it will bring substantial benefits such as the higher monthly salary for government employees, increased pension for the pensioners. It will improve purchasing power amid rising inflation and price rise. It will also significant for base fitment factor for the 8th CPC. So these are the significance of 60% DA of the for the month of January 2026. So this is most significant DA as far as 8th CPC is also concerned. So this DA connection with 8th Central Pay Commission. Now here is the most interesting development, like whenever DA reaches around 50% or above, discussions about the next pay commissions become stronger. So when ये DA 50% से ज्यादा हो जाता है तो strong demand बन जाता है पे कमीशन का जो increase benefit के लिए. Moreover, reports and experts discussions suggest that the 8th CPC may consider a higher fitment factor base as compared to 2.57 of the 7th CPC. So ये जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर ये 7th पे कमीशन में था, तो इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉय यूनियंस and the experts expect कर रहा है. Many analysts estimate the possible fitment factor, ये expectations है, to be around 2.8 to 3. So ये जो fitment factor के लिए expectation है 2.8 to 3.0 का बीच में ये होना चाहिए. This is the expectation of the ये. Many analysts estimate the possible fitment factor to be around 2.8 to 3.0. So this is optimum fitment factor as expected by most of the stakeholders. This is why the 8th pay commission discussions are being closely watched across India. So ये fitment factor जो है main है, उसका ऊपरी पे को रिवीजन होता है नया पे कमीशन आने से. So ये most important factor है. The 8th CPC fitment factor. The January 2026 DA revision is uniquely significant because 1st January 2026 marks the official commencement of the 8th CPC. So January 1 से ये 8th CPC already start हो गया. So this is why this DA is very significant. That is the most important so far 8th CPC is concerned. Historically, when a new pay commission is implemented, the existing DA is merged with the basic. ये तो normal प्रोसीड्योर है, ये नॉर्मल रूल है. जब नया पे कमीशन आता है तो जितना एग्जिस्टिंग डीए होता है वो बेसिक पे का साथ में मार्च और उसी से फिटमेंट फैक्टर बनता है. एंड द डीए फॉर द न्यू पे स्केल इज रीसेट टू 0. तो दैट इज व्हाई ये जनवरी टू जून का जो डीए होगा, ये अभी जो 60% आएगा ये पूरा का पूरा बेसिक का साथ मार्च हो जाएगा और उससे फिटमेंट फैक्टर में तो कन्वर्ट कर देगा. एंड डीए विल बी रीसेट टू 0 फ्रॉम जनवरी टू जून एंड द नेक्स्ट डीए इंस्टॉलमेंट विल बी फ्रॉम जुलाई 2026. दैट विल बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर द 8. व्हाइल द 60% डीए इज द बेंचमार्क,
So this 60% DA is benchmark for the final 7th CPC adjustment, and it will serve as the inflation buffer and help determine the fitment factor for the 8th पे कमीशन सैलरी स्ट्रक्चर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो 60% डीए है, ये जितना भी इन्फ्लेशन है, ये बफर दैट इज इसको फिक्स करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए ये काम करेगा। प्लस दिस विल हेल्प टू फिक्स द fitment factor for the 8th CPC. It is also confirmed that 8th CPC fitment factor will be decided based on a minimum factor of 1.6. ये तो होना ही है। अभी जो हम लोग का सैलरी है इंक्लूडिंग अगर डीए ये 60% होता है तो हमारा जो बेसिक 1 होता है प्लस 0.6 आता है डीए का, तो मार्क्स कर देने से ये 1.6 होता है। दैट इज वाई ये जो ऑलरेडी हमारा जो फिटमेंट फैक्टर 1.6 हो गया, तो इसका ऊपर जो भी फिटमेंट फैक्टर है आना चाहिए। अगर 1.6 होता है ये मेरा न्यूट्रल रहेगा। ये जो हमको अभी हम लोग का जो पे अभी है, मार्जिंग द डीए विद द एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर। सो ये तो हो गया बेस फिटमेंट फैक्टर हम लोग का ऑलरेडी 1.6 हो जाएगा। तो इसका ऊपर न्यू जो फिटमेंट फैक्टर होगा कमीशन डिसाइड करेगा और गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। What employees should expect next? तो एम्प्लॉय का नेक्स्ट क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है तो उसको एनालिसिस कर ले। So what happens next? The government will review the DA and DR calculation based on consumer price index for industrial worker data that are already released. An official DA and DR announcement may follow shortly and most probably expected in the month of March 2026 after Union Cabinet meeting approval. And discussions around the 8th CPC may gain momentum during 2026. तो अभी इसका ऊपर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है वो सब लोग अपना अपना डिमांड मेमोरेंडम अभी वो लोग सबमिट करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बेस बन गया 8th CPC के लिए। फॉर मिलियंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स दिस डेवलपमेंट्स would bring major financial relief. So ये जो डेवलपमेंट्स अभी है अपडेट है, इसका ऊपर बेस करके मेजर फाइनेंशियल रिलीफ डिपेंड करेगा। जितना भी हम लोग का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और रिटायरीज है, पेंशनर्स है, सबके लिए ये फैमिली पेंशन होल्डर्स सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक डीए एंड डीआर and pay revisions are not just numbers. They directly impact the lives, financial security and dignity of millions of hardworking government employees and pensioners. Staying informed help us plan our financial future better. If you found this update useful, please like, share and subscribe to Dr. Samad Global. Together, let's stay informed about education, financial literacy and important national and global developments. Thank you for watching. This is Dr. Abdus Samad and I will see you in the next video.